Good afternoon, candidates. This video is all about what the State Bank of India is expecting from their officers. The key traits that the SBI looks for, the true strength of State Bank of India lies in its employees. The bank is committed in finding the right people who can contribute to the growth of the bank and in the process grow professionally and personally. There are 6 key traits any successful employee at SBI possesses, and the bank actively looks for individuals who possess these qualities. The first one, willingness to learn. The bank believes in learning by doing. At SBI, you are constantly faced with new challenges and unfamiliar environments. The ability and eagerness to learn quickly and grow is a crucial trait that which the bank values in all its employees. Willingness to learn. Next one, team player. The employees of SBI are members of a highly knit or tightly knit family, and they work in teams of motivated people to achieve their goals. State Bank of India truly values individuals who can work effectively in team settings and encourage other team members to work towards common goals. Team player. Next one, effective communication. The bank looks for those who have the ability to listen proactively, demonstrate proficiently in practical, in verbal and written communication, and use logic to convince others of their point of view. This is not only important during discussions within the team, but it is also relevant in fostering long-term customer relationship. Strong leadership potential. At State Bank of India, we want people who will be future leaders and drive the changes in the banking industry in India and worldwide. The future leaders should have a strong inclination for taking initiative, driving results, and producing quality output. They should have the ability to take their teams along and steer the bank towards success. Analytical ability. Strong analytical ability lays the basis for sound business judgments and strategic decisions making in the future. The bank needs people who are able to use data and logic convincingly for all their tasks, from discussions to making key decisions. Adaptability. With ever changing needs of the financial world, the State Bank of India needs individuals who are adaptable and mobile, willing to adjust to variety of roles and geographies, and show responsiveness to the needs of the bank. So these are the points given in the key traits that the State Bank of India is looking for. Now I am telling you in Hindi. The first important पहला important point है willingness to learn. आपको नया नया काम सीखने के लिए willingness होना चाहिए, आपको इष्ट होना चाहिए, desire होना चाहिए. नया नया चीज पढ़ना है, नया चीज करना है, ऐसा में willingness आपको होना है. सेकेंड बात, आप गुड टीम प्लेयर होना है. टीम प्लेयर का मतलब आप जानते हैं, दैट इज टू वर्क अलोंग विथ अदर्स. नॉट ओनली हम मेरा काम करेगा, कोई दूसरे का काम नहीं करेगा, ऐसा खाली एक जगह पे बैठेगा, ऐसा तो नहीं होगा. यू मस्ट फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम. मे बी यू आर वन अमंग द मेनी और यू आर द टॉप. आप टीम प्लेयर बन के काम करना पड़ेगा. आप लीडर होगा तो दूसरे का विलिंगनेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी बैंक में आप ज्वाइन करने से तो अच्छा से कम्युनिकेट करना है, जो आपका मन में है उसको ठीक से बोलना है, जो आपका मन में है उसको क्लियरली और ब्रीफली बताना है। इसका अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा से सुनना है। कोई कस्टमर आके बताएगा कुछ प्रॉब्लम, आप पॉइंट को सुनना है। इसका बाद में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोटेंशियल, इसका मतलब ये है आपको लीडरशिप क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ गया इसी वजह से डरना नहीं है, अच्छा से सोच के दूसरे को कंसल्ट करके अच्छा काम करवाना है। एनालिटिकल एबिलिटी, कोई बैंक ऑफिसर और मैनेजर बनेगा तो कोई चीज को, कोई सिचुएशन को एनालाइज करके उससे कैसे करेगा, अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, ऐसा सोच के काम करना पड़ेगा। इसका अलावा अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी का मतलब आपको कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई जगह पर पोस्ट कर सकते हैं, उधर में आपको एडजस्ट होना है और उन लोग से एडजस्ट होना है, उधर वेदर से एडजस्ट करना है, अडेप्टेबल करके काम करना है। ये सब चीज आपको बैंक आपसे एक्सपेक्ट करता है। नाउ इन तमिल, முக்கியமான குவாலிட்டி என்னென்ன வேணும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எதிர்பார்க்கிறதுன்னு கேட்டால், முதல்ல வந்து புதுமையாக வரக்கூடியவற்றை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். புது திங்ஸ் வரும்போது அதை அப்படியே தள்ளி போட்டுடக்கூடாது, அதை படிக்கணும். அப்புறம் டீம் பிளேயராக இருக்கணும், அதாவது மற்றவர்களோடு சேர்ந்து ஒற்றுமையாக வேலை செய்ய வேண்டும், மற்றவர்களையும் ஒற்றுமையாக வேலை செய்ய வைக்க வேண்டும். அப்புறம் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் வேணும். முக்கியமான பேங்க் ஆஃபீஸர் மேனேஜராக இருந்தால் நல்லா காது கொடுத்து கேட்கணும், மற்றவர்களுக்கு கவனமாக தன் மனத்தில் உள்ளதை தெளிவாக சொல்ல தெரிய வேண்டும், சொல்ல வேண்டும். அதற்கு அது எழுதவும் வேண்டும், வாயால் சொல்லவும் வேண்டும். அதற்கு பிறகு ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் பொட்டன்ஷியல், ஸ்டேட் பேங்கில் ஆஃபீஸராக சேர்ந்து மேலே மேனேஜராக ப்ரமோஷன் ஆகி போகும்போது உங்களுக்கு நல்ல லீடர்ஷிப், தலைவர் குவாலிட்டி வேணும். மற்றவர்களை அணைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும், மற்றவர்களை ஊக்குவித்து செல்ல வேண்டும், மற்றவர்களை மோட்டிவேட் செய்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். அப்புறம் அனலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி, அனலிட்டிக்கல் எபிலிட்டினாக்க அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னு வந்துச்சுன்னா அது ஏன் வந்துச்சு, எப்படி வந்துச்சு, எதனால வந்துச்சு, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சிந்தனை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அடாப்டபிலிட்டி, அடாப்டபிலிட்டினா என்னன்னாக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வெவ்வேறு இடத்துக்கு உங்களை போடுவாங்க, வெவ்வேறு கெப்பாசிட்டியில் போடுவாங்க. அப்படி போடும்போது அதோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லெவலுக்கு இறங்கி அல்ல அந்த லெவலுக்கு சமமாக ஆகி மற்றவர்களோட இணைந்து అழகாக పనిపుడియ வேண்டும். இதுதான் అడాప్టబిలిటీ. ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాము. ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్లో ఏమి ఇచ్చినారంటే కీ ట్రైట్స్, కీ క్వాలిటీస్ ఏం కావాలి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్ అనేకి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ విల్లింగ్నెస్ టు లర్న్. అక్కడ ఏం చెప్పినారంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఎనీ బ్యాంక్లో మీరు జాయిన్ చేస్తే మీకు న్యూ చీజ్ నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. యూ మస్ట్ నో దట్. And naya cheese, new things you have to learn. కొత్త చీజ్ లర్న్ చేసుకొని అది చేయాలి. తర్వాత మీరు బాగా టీమ్ ప్లేయర్ ఉండాలి. కానీ మీరు పని చేస్తే అవదు, అందరి దగ్గర కలిసి ఆ పని చేయాలి. తర్వాత ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్, బాగా రాయాలి, బ్రీఫ్గా రాయాలి, తర్వాత బాగా కమ్యూనికేట్ చేయాలి और बागा विनाली. यू हैव टू लिसन प्रॉपरली. इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोटेंशियल चाहिए, आपको अच्छा लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, सबके समान के, सबको एनकरेज करके, सबको मोटिवेट करके, సారీ అందరి దగ్గర కలిసి లీడర్షిప్ క్వాలిటీ మీ దగ్గర ఉండాలి. అందరికీ అప్రిషియేట్ చేసి మీరు పని చేసుకోవాలి, గుడ్ లీడర్ ఉండాలి. తర్వాత అనలిటికల్ ఎబిలిటీ, మీకు ఏమేమి సిచ్యువేషన్ ఉంటే అది ఎలాగ వచ్చిందని అనలైజ్ చేసి అది బాగా డెసిషన్ తీసుకోవాలి. తర్వాత స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎనీ బ్యాంక్లో మీకు ఎక్కడైనా వేస్తుంటారు, అక్కడ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుని అడాప్ట్ చేసుకుని అందరి దగ్గర కలిసి మీరు పని చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ సే
what the State Bank of India is looking for in a bank officer, and all these qualities are very much required for CBO also, except that under adaptability you must be willing to move within the circle. Okay, thank you, best wishes.